भी हो तो ताले discussion start करिवा. So hope everybody is ready for the discussion. So now the question will comes. Those who have not enrolled, you are most welcome to enroll the test series. Now the fast questions. Here you can see the fast question. Minimizing so that it would be easy for you. Now the fast question before you. You can try. Try करिवर करो समझते. The first questions. Try करो किसी नहीं. No आसले तुरंत मो 2-3 सेकंड देवी तमन को. तमने try करो किसी न हो then I will move through. Hope I am audible to all. Everyone. Sir, option B. Sir, B. Option B, sir. B हवं sir. Sir, same B. question ଏବେ ବି ଆସିଥିଲା. Same question also repeat ହେଇଥିଲା. Yes, sir. Environment repeat ହେଇଥିଲା sir. Same question. Okay. ତାହେଲେ same question repeat ହେଇଥିଲା ବୋଲି କହୁଛ. ତାହେଲେ answer କଣ କହୁଛ ତମାନେ? B. ଆଉ B ଯଦି answer ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ମତେ କୁହ? Then why B is the answer? Hello. Sir, you are not audible. सर टिके माइक ऑन करके कहूँ सर. ହେଇଗଲା ନା? Yes, sir. ମୁଁ ସେ ମାନେ join କରିକି ଦେଖୁଥିଲି ଏପଟେ ତ ସେଟା mute ହେଇଗଲା. Okay, ଠିକ ଅଛି. B option କାହିଁକି B କାହିଁକି answer ହବ? Carbon dioxide is not there, sir. Carbon dioxide is there. ତାହେଲେ ଫଟାଫଟ gases କହିଦିଅ. ସୁଶ୍ରୀ ତମେ କୁହ. So, PM 2.5, PM 10, nitrous oxide, and carbon monoxide, sulfur dioxide. ବହୁତ ବଢିଆ. ତ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ତ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଏବେ ମୁଁ ଡିସ୍କସ କରିଦଉଛି ଫଟାଫଟ. Now the air quality index which was introduced in the year 2014 under the Swachh Bharat initiative. First କଥା ହଉଛି 2014 ରେ ଆସିଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ initiative funded ଆସିଥିଲା. Here we cover 8 gases is been covered. The 8 gases like it would be like NS3, PP, PM10, PM2.5. Hope A ସହିତ ସମସ୍ତେ acquainted. kind of ammonia, lead, PM10, PM2.5, then tomorrow NO2, SO2. This is also causes the acid rain. Apart from that, CO and also ozone also they're the part of this. Okay, so these are the gases which is included into the air quality index of India. बहुत ही basic question बहुत थोड़ा पचारुची. Now these two हम यदि देखिबा that means sorry this one and this one they are not part of the eight gas. So बाकी तमरो सब रही So, sir, number 1, carbon dioxide. oh sorry carbon dioxide है ना. So that means 1 and 5th. तो 1 को कैंसिल कर देले आंसर बाहरी जाउची. तो 5 भी तुमको दरकार नहीं. 1 को कैंसिल कले बाहर जाउची. बुझि पछन. तो ऑब्वियसली मु कहिछि कि जेते बेले तमरो देखो which of the above is correct तुमको कहजिवो सेते तुम इनकरेक्ट को खोजिबो. यदि इनकरेक्ट को हम एलिमिनेट कर देले हम करेक्ट रे पहुंच जियो. फॉर एग्जांपल जेंति कि कार्बन डाइऑक्साइड को. सो 1 गॉट कैंसिल ऑब्वियसली आंसर मिलि जिवो. तो सेति पे आगे देखिबो एटा को. नाउ टिके हम देखि देउछि आपरे. So that means locally in the year 2014 which was started. It was started in 2014 under the Swachh Bharat initiative. As a which organization, did it talk about which organization exactly
that initiated by जो idea किए करथिले मतलब which organization that exactly the set up such kind of एक that is the AQI को organization करथिला Prevention and Control of Pollution Act 1981 रे ହେଇଥିଲା sir. that is the what CP Central Pollution Control Board है ना ये आपको डिवाइस करथिले this one बहुत बढ़िया so अच्छा दीदी एथे गोटे आउ गोटे क्वेश्चन तुमको ये गोटे गला हमर देखिले कि 8 gases included here which city of India is right now the most polluted city Delhi. एक जे में देखिबा New Delhi. Delhi. so it's a what Bhiwandi that is Rajasthan है ना Bhiwandi Rajasthan वर्तमान तमे देखिबो अच्छा दुनियार मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी की which is the most polluted city of the world Lahore Lahore, that is sir. what Lahore yes तो एई भलिया जेतरे तमे गोटे क्वेश्चन सॉल्व करूछ केवल आर आंसर भितरे सीमित रुह नै निजको you have to expand into the horizon if any kind of direction is coming out from that particular questions try to have the 360-degree angle of that particular question so that your horizon will increase and the chances to have the question or the that kind of question could be more repeatedly तुमको दिखाଯିବ and I would say well, the probability of the question will definitely increase तो एथिरे तुमको most polluted पचार पर most cleanest कौन इंदौर obviously तुमने जानिचो इंदौर back to back 3 years इंदौर followed by Surat okay so these are the cleanest city and the polluted city तुमने देखि देला if either they will ask you the most polluted city they will ask you the most cleanest city which are the gases included AQI आउ कौन क्वेश्चन हे परबो AQI रो let's say if I give you a chance to make a question to what could be the other questions probability कौन हे परिबो एथर AQI रो anyone the color what the color used जेमती ग्रीन रेड पिंक ये सब कलर यूज करा जाय कि नहीं जेमती तमे भुवनेश्वर रे जेतरा मूव करो देखो गोटे गोटे ट्रैफिक रे AQI लागि छि डिस्प्ले लागि छि तुरंत देखो 25 30 100 130 एमती सब रियल टाइम रे ऑब्जर्व होछि कि नहीं देखि तो होप तमे देखि थो डन एवरीवन so that is को कलर कोथि पे यूज कराउछि ग्रीन केते बेले येलो केते बेले रेड केते बेले पिंक केते बेले है ना ये तुमको देखाइछो अच्छा जदी तुमको तीनटा कलर मु AQI रे देबी orange red pink which is the most dangerous Yes. Obviously, red. okay so it would be pink it's a Pink. what pink the pink is the most devastated that means the highest level of pollution okay तो याकू टिके एमिति कलर भी देखियो कारण तमे खाली गैसेस पढ़ी कि जीवो जे तुमको कलर पचार दो तुम सेठी पुनी स्टॉक हे जीवो बुझि परछन तण करके जेते बेले पढुछ एंड दैट हरिजन वुड नॉट एक्सटेंड सेटा तमे निजे चाहिले से हरिजन को जाई परिबो नाही you need to have some sort of what assistance from anyone having the experience more than you I'm not saying that I'm the right person for you you can have guidance from any other person those who have already spent certain times with a pretty good times with this system so that तुमको हरिजन जाना पड़ियो कि हाँ इथरो आउ को अगर क्वेश्चन ही तो otherwise it does not mean that the question which we have asked or that we are discussing here that is going to repeat in the exam that is not going to happen there they will ask like the periphery questions like when I was discussing like few minutes ago now comes to the second question the second question consider the following statement now following statement and you have to find out the correct answer using the code. Now the code is here. You can see the code. Just a minute. Let me minimize. कोड तो आसु ही नहीं अच्छा कोड टा देखि दियो all अछि 2 3 अछि 4 2 अछि none of the above अछि अच्छा मते कहि दियो ना प्रथम देख तुमरो तो एथिरे तुमको मु कहछि जोटा करेक्ट जदी पछाछि तबे इनकरेक्ट को खोजिबो दैट मींस हमें जदी देखिबा एठी देख एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन 2008 मु भाई तुमको कहि 14 रे एबे कहिथिले ना Yes, sir. 2014 so this so one got cancelled जदि one को cancel करिवा तो आंसर साइड मिली जो tomorrow now one got cancelled that means ये हबो
नहीं ठीक अच्छे मुव करवा आम ना एथे देख अच्छा आउ गोटे टेक्निक तुमको कहूँ सब मोस्ट कॉमन किए देखिए टू 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 टा मोस्ट कॉमन अच्छी है ना ताले तापर देखियो 4 को एलिमिनेट करियो ना 2 को एलिमिनेट करी तुमको आंसर मिलियो देखियो आम ना ये तो तुम जानिछ दैट मींस 4 टा आंसर बुझियो ना ये तो 8 तो कैटेगरीज अछि as 8 कैटेगरीज ऑफ द एयर क्वालिटी इंडेक्स ना ये तुमको देछि जोटा मु तुमको कहली आईआईटी मद्रास मु कहि नथली तो एयर क्वालिटी इंडेक्स मु तुमको कहली सीबी कथा कहली आईआईटी मद्रास कथा मु कहिनी सो 3 गॉट कैंसल हां कि नहीं होप मन पड़थो सो 3 गॉट कैंसल तो 3 जदी कैंसल होची दैट मींस तमरो कैंसल हे जिवो ए भी कैंसल हे गेला बी भी कैंसल रहला बंचुची तमरो कोन सी तापर देखियो आउ टिका को जिवो आज अपना सी बाहरुची तापर देखियो पड़ियो next that is 3 cancel लगला the high that is the higher measure of the air quality index the quality of the air would be good एटा को 2 को देखि दियो 2 को देखि दियो Wrong. this is also wrong है ना and 2 को एलिमिनेट करले मु तुमको एबे देखैथिली केमति मु तुमको एठी देखैछि देखो 2 नहले 4 को एलिमिनेट करिया थिला बट 4 तो करेक्ट अछि तो 4 तो एलिमिनेट हबो नाही दैट मींस हमको 2 को चेक करिया थिला और 2 को चेक करेरु बाहर गेला कि नॉन ऑफ द एबव है ना कारण हायर द मेजर मींस जेमति मु कहली पिंक कोन हाईएस्ट लेवल तो एठी कोन हबो गुड केमति हबो एटा बैड हबो इट वुड बी बैड ना बुझा पड़िबन काकू बुझा पड़िबन काकू सर बुझी कंफर्टेबल होची डोंट है ना Yes, sir. बुझा होची sir. सो दैट मींस इट बुझो वुड बी सर बैड तो देखो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करथले सेइथरो आंसर एटा भी बाहर गेला आराम से केना एटा तुमे करेक्ट जानिछो एटा तुमको कहली एटा तो हाई हबो नहीं तो ऑब्वियसली तुम देखियो आउ गोटे टेक्निक मु तुमको एठी कहू सिखै दोछि फटाफट देखि देबो जेतेबेले तुमको एई भले कॉम्बिनेशन थिबो तुम देखो हाईएस्ट कॉम्बिनेशन की अछि है ना या टेक्निक देखो ये ला तुम्हारा हाईएस्ट कॉम्बिनेशन ना सेकंड हाईएस्ट को देखिलो लेट्स से 3 भी 3 थर अछि भाबो एठी मु 3 देई थांती तो 3 भी 3 थर अछि 2 भी 3 थर अछि ता अर्थात 2 आउ 3 को आगे डिस्कस करो ए भितर कोटा गुटी कैंसिल हे गेले आंसर बाहरी जिवो ना बुझा पड़बेन काकू है ना ई भले बहुत सारा तुमको टेक्निक अप्लाई करियो पड़िबो आंसर रे पहुंचे पे हेले ना नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन Answer neither one nor two, sir. neither one nor two कोन पई Sir, first one टा जो देछि high clouds primarily reflect solar सेटा तो thin cloud हबो ना sir. thin cloud हबो तो thin Hmm. cloud ले रिफ्लेक्ट करिवनी तमे कहछो कि thin is the cloud that would not reflect Yes, sir. Second टा sir जो low clouds have a high absorption देछि सेटा low clouds हम red radiation emanating सेठी टिके डाउट लागुतला sir मत. okay anyone else anyone okay now usually what happens let's say this is your earth now the high clouds are basically the thin cloud they're very thin so as they're very thin and they remains also high प्रथम কথা দেখো two things here one is altitude one is thin these two things is very important because earth cooling impact of whether it is going to heat or cool the surface that will depend on so many factors the factors like the altitude what exactly the altitude of the cloud what is the color of the cloud what is the thickness of the cloud like so many things are needed to be calculated whether that will have the impact on the ground or not. Hence, here the high clouds, what they primarily reflect the solar radiation, sequence and cool the surface. प्रथम কথা কোন হবে कि যেতବେଳେ তোমার হাই ক্লাউড থাকে ये কোন করে রিফ্লেকশন ডিপেন্ড অন দ্য থিকনেস অফ দ্য ক্লাউড थिकनेस ऑफ द क्लाउड ଉପରେ डिपेंड करे as the high clouds are very thin cloud तो सेते से करि पारे नाही आउ कोन हबो जेतेबेले तुम देखो हाई क्लाउड जेहेतु थिन क्लाउड है दे आल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर माने इन्सुलेटर थाती टेम्परेचर को बढ़ाइबो रेडिएशन एते करबो ना ह्यूमिडिटी बढ़िबो लेट्स से दिन बेला बाबा टिके टिके जस्ट माने खरा कम थिबो बट ह्यूमिडिटी बहुत हबो बुझिबो से बट लो क्लाउड कोन करे से ठीक कहछि देखो लो क्लाउड रो थिकनेस अधिक थाए तेनु से रेडिएशन अधिक करबो किंतु एठी से कोन कहछि देखो रेड रेडिएशन एमिटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस thus cause the से कहछि कोनो वार्मिंग इफेक्ट
वार्मिंग इफेक्ट कथा कहछि बट वन थिंग एठी मिस होछि तमे जोटा तमे एबे कोछ आइडेंटिफाई कर परलनी Yes, ये sir. कौन कहछि ना देखो लो क्लाउड से कहछि हाई रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंफ्रारेड Hmm. रेडिएशन एमिटिंग फ्रॉम द अर्थ ना ये एब्जॉर्ब करे नी ये रिफ्लेक्ट करे ना द Hmm. पॉइंट इज हियर that does not absorb cloud absorb करे नी reflect कराए like the global warming कौन कहेंगे let's say you are having cloud here cloud छी ना अर्थ जेतो रेडिएट करूची at the night रे जेतो तोर like the present time night अर्थ कौन करे रेडिएशन करे काहाकू लॉन्ग वेव्स को शॉर्ट वेव्स तमे जानिछ शॉर्ट वेव्स से डे टाइम रे तो राति रे कौन थे लॉन्ग वेव्स जाए as that long waves would be redirected back towards the earth hope you are getting back ये ताको absorb करिवनी it will again redirect it towards the earth so that Hmm. your temperature of the earth will increase so that Yes. is not absorption it is reflection done everyone Yes, sir. hope everyone is comfortable बुझा पड़छ समस्त को Yes, sir. anyone is having problem like लैंग्वेज वाला इशू तो काको नहीं आ रहा है ना किसी को भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है नहीं तो बोल सकते हो you can have also discussion in Vodia but I do prefer to have English because you are going to serve the people in a higher level. Okay, sir. So now comes to the question number 4. Which of the following statements is are correct regarding the subsidies boxes? Now, this question is very basic questions, and I know many of the people they don't have the clarity as well. Okay, let's see. Now this talks about the Article 6 of your what that is Uruguay round. जो तुम्हारा Uruguay round हितला that is agreement on agriculture. This is very important. Agreement on agriculture Uruguay round Article 6 कौन थी ये सब्सिडीज ऊपर कौन थी ना एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ध्यान से सुनिबो ये सब कौन ये तुमको तमे केबे भाबिया दरकार कि व्हाट अबाउट द ग्रीन बॉक्स अम्बर बॉक्स ब्लू बॉक्स व्हाट दे अबाउट दैट मींस they talk about the what I would say the agreement on agriculture. That means there was a tussle between the developing countries and the least developed countries and the developing countries. Developed, developing, and LDC. That is the least developed countries. Okay, what will happen to the trade? क्या ना तुम्हें जानते हो trade टा कौन को distort होता है. Hope distort रा meaning बुझी परियो तुम्हारे. Distorting. अर्थात disturb करिबा trade को. That means that would not be a level playing field. That distort the trade. हाँ कि नहीं? So level playing field, we need a level playing field. बुझिपारुछनी तेणु करिकी the agreement on agriculture that talks about the agreement that means we shall have a level playing field. कौन रहबो हमरो level playing field रहबो नार मीनिंग किछि बुझा पड़बनी काकू ना देख लेवल प्लेइंग फील्ड रे कोन अच्छा एबे आंसर कम छी जा भी हो से कुछ एबे देखो त माने देखि आंसर ट्राई करो कोई सब अच्छा मते को कोटा भीतर भूल अछि आंसर को तो ऑब्वियसली तुमको मिल जिवो बट व्हिच ऑफ द पॉइंट्स इज रॉन्ग करेक्ट जा भी अछि तुम कहि परिबो यू कैन आल्सो ट्राई So one is incorrect. The inbox question. one is okay let me go through that one green box is part of that discharge choice no this one is not so one got wrong amber okay amber को देखि दिया now तुम्हें one को eliminate कर देलो one got your eliminate और रहला 2 and 3 now it's a 2 and 3 and try करो अभी टूटा ठीक अछि 2 to 3 okay ताले blue box से कहछि एठी कहछि do not distort the thread ठीक अछि कथा हमें देखियो एबे हमें देखियो ना ग्रीन बॉक्स ब्लू बॉक्स एम्बर बॉक्स ये काहे की आसी छी ना ये एथि पे आसी छी कि जो एग्रीकल्चर तुमको नियो एग्रीकल्चर लेट्स से आरटी के कांसेप्ट बुझेती सो दैट तुम इजीली जान परिबो concept होछि फॉर एग्जांपल द कंट्री लाइक इंडिया इज a developing country. Now, here we are assisting the farmer in terms of the subsidies, in terms of the direct payment, and certain also indirect payment. ଯେମିତି ତମର କାଳିଆ ଯୋଜନା ବଗେରା ଏ ସବୁ କରାଉଛି କଣ ନା certain direct payment ଦିଆଉଛି କିଛି indirect payment or subsidies ଦିଆଯାଉଛି agriculture subsidies ଦିଆଯାଉଛି
Now, why subsidies we are providing in agriculture? This is a basic question. Why the government, the central government, or let's say the state government, why they are providing subsidies? कौन ପାଇଁ ଦଉଛି subsidy? Because the farmers, they are not capable enough or they are not viable enough. ତାଙ୍କୁ encourage କରିବା ପାଇଁ ଆମେ subsidies ଦଉଛେ. But imagine करो that subsidies given capabilities will differ from the country to country, isn't it? Again, differ करिବ कि those countries, they are developed enough, like the USA, Germany, France, they are the developed country and they will have the more ability to provide the subsidies as compared to India. And ଯଦି ସେମାନେ ଅଧିକ subsidies ଦେବେ, then the cost of production would be less and their production would be more. Production ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ହବ କାରଣ subsidies ଦେଲେ production ବଢେ, ତମେ ଜାଣିଛ ହଁ କି ନାହିଁ? So ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ farmer, they would not be nowhere to compete with their farmer. They would be nowhere to compete. ନା ବୁଝା ପଡିବନି କାହାକୁ? Hope you are getting me. Yes, sir. ତେଣୁ କରିକି subsidies କୁ rationalize କରାଯାଉ. ତେଣୁ agriculture ଯୋଉଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି, agreement on agriculture, meaning you have to rationalize, you have to reduce the subsidies which is being given on a particular agricultural product, particular ହେଇପାରେ, overall ହେଇପାରେ. Now who will reduce? Developed country. How much? They would be restricted below, that is but 5%. Okay, ଯେତିକି cost of production, let's say cost of production is 100 rupees, that means ତମେ କଣ 5% ରୁ ଅଧିକ subsidies ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ. But in case of developing countries, that is 10%. The cap is 10%. Now green box ରେ କଣ କରେ, and ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି 5 and 10, that is amber box. That means 5% ରୁ ଯଦି ତମେ ଅଧିକ subsidies ଦଉଛି and the developing countries ଯଦି 10% ରୁ ଅଧିକ ଦଉଛନ୍ତି, that will disturb the trade को disturb करिवो, कारण इंडिया रो फार्मर माने चीपली अधिक प्रोडक्शन करिवो, बाकी देशर फार्मर सहित एमाने बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव हेजिवो और तांकर लॉस हेजिवो. तेणु करके एथरे गोटे एग्रीमेंट करा गला कि देखो, दोज हु आर द डेवलपिंग कंट्रीज तमने 5%, डेवलप ପାଇଁ 5% एंड डेवलपिंग ପାଇଁ 10%. तमको एमती कोन पे? बिकॉज़ एमाने डेवलपिंग, एमानकर फार्मर्स माने वीक. होप एबे बुझी पारिबो. And ये कौन करूचे, हमें लिमिट करूचे, कौन करूचे? That means by giving 5% or 10%, we are limiting or reducing the subsidies being provided on the agriculture, and that could be direct or indirect subsidies. ये कोहा अंडर आसुची amber box. But green अर्थात कौन? Go. मतलब ठीक अछि, किछि असुविधा नहीं, you can go, you can give subsidies here. That subsidies is not going to disturb the trade. International trade को कौन सी प्रकार any kind of distortion would not be, or that would not cause any kind of distortion to the international trade. तेणु green ର अर्थात go, एथरे किछि प्रॉब्लम नहीं, but amber रे प्रॉब्लम अछि, बुझिबोछनी? So here is the problem. Now comes to the blue box. ना देखो, blue box रो कौन करा जाए? Blue box रो किछि लिमिट नाही. यदि हमें एक्जाक्टली देखिबा agriculture on agreement data को यदि तमे पढिकी देखिबो, and this talk about the article 6 of agreement on agriculture Uruguay round. Now blue box कोन हुए, जोटा तमरो amber box रे आसु नाही, ताकू हमें blue box रे पुट करिबा, है ना? बुझि परछनी? That means blue box रे भी subsidies, बुझि परछनी? ये कोन करे, ये भी distort करि पारंती, है ना? They can, ये भी डिस्टर्ब करिपारे. सही आंसर वुड बी, so this is what 2 is the most appropriate answer. ना एटा काकू बुझा पड़िबनी, पूरा एक्सप्लेन कर देली मु. Yes, sir. Now comes to question number 5. बहुत easy question, mapping math based question. Which of the following above are the Godavari tributary? अच्छा, प्रथम कथा को Godavari origins from where? Anyone? Godavari origin कोठी हेता है? नासिक, त्रायंबक प्लेटू, हाँ कि नहीं? And the second longest river of India after Ganga. Done everyone? ना बुझा पड़िबनी एटा भी. Nashik also famous for the onion वगैरह, तुम तो जानी से समझते हो कौन कही भी. Done. चल ट्राई करो, कौन है गला? हे परिबनी. अच्छा, प्रथम कथा देखियो, ये तमरो जो कहिछि वंशधारा, ये वंशधारा तो तमरो गंजाम ही की जाउची, बुझि परछनी?
दैट मीन्स गंजाम रो जो हमरो गजपति गजपति हेकी जाउची देन आंध्र प्रदेश को जीवो दैट मीन्स ये तो तुमरो गोदावरी रो नुह तो आकु कैंसल कर दियो कैंसल कैंसल दैट मीन्स रहिला तुमरो एबे 2 and 4 2 and 4 2 and 4 रे कॉमन किए देखो 2 is common that means 2 is correct so 2 is correct बाकी रहिला किए तुमरो Option 2 is the answer. then आमे देखिबा कोन 3 and 4 3 and 4 4 is Pennar and Pennar is not a tributary. Pennar is not tributary. So it is Indravati and Pranahita is the tributary. So 2 and 3. The 2 and 3 is here. So add option 4. That means option 4 is the answer. So option 4 is the answer. अच्छा एबे ताले फटाफट ट्रिब्यूटरी कहि दियो गोदावरी रा मु ड्रा करके देखि दउची ना गोदावरी होची तमरो देखो गोदावरी की कहजे दक्षिण गंगा भी कहजे बुझ बछन आपको कोन कहजे दक्षिण गंगा ठीक कहूँ ना भूल कहूँ भूल ताले दक्षिण गंगा किए कावेरी ताले आपको कौन कहजे वृद्ध गंगा आपको कौन कहजे वृद्ध गंगा ध्यान से मन रखो आपको कहजे वृद्ध गंगा है ना जो गोदावरी की कहजे दक्षिण गंगा नुह वृद्ध गंगा दक्षिण गंगा होची तमरो कावेरी है ना तो कावेरी होची दक्षिण गंगा ना जति आमे गोदावरी फटाफट डिस्कस करबी दिस इज द सेकंड लॉन्गेस्ट पेनिनसुला रिवर रो ओवरऑल रिवर सेकंड लॉन्गेस्ट and the longest of the peninsula, one of the mightiest rivers, having one of the largest catchment area, originated from the Nasik Trambak Plateau, Maharashtra, Western Ghat, and following the north, that is the what southeast direction. Sorry, southeast direction, fall into the Bay of Bengal. After meeting with the whom? Kasita, Krishna. Krishna Sita Misijibo and making the delta that is one of the largest delta, but not largest delta. The R tributary होची और जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आसबो वारधा इंद्रावती आई फॉर इंद्रावती डब्ल्यू फॉर वारधा एंड आ गोटे कोन रहला तुमरो आ गोटे हैला तुमरो वेनगंगा डब्ल्यू फॉर वेनगंगा पेनगंगा वारधा इंद्रावती ध्यान से मन रखो वेनगंगा पेनगंगा वारधा इंद्रावती these are the left bank tributary right bank tributary गोटे ही तार मानसरा only right bank tributary that means a cancel ही जाउची so these are the ना तमे को सर प्राणहिता कुआड बसिला ये तीनटा मिसिल हबो प्राणहिता ध्यान से सुनो वेनगंगा फेनगंगा इंद्रावती ये सब मिसिला परे गोटे रिवर हुए से होची प्राणहिता होप यू आर गेटिंग मी है ना इंडिया मैपिंग सर देखी जो देखो राइट रे ट्राइब्यूटरी थिला ता नाटा सर आउथे वेनगंगा पेनगंगा वारधा इंद्रावती इंद्रावती जेतले मु तुमको ओडिशा ज्योग्राफी पढ़ीथिली सेथरे कहितली इंद्रावती इज व्हाट ये होची ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी सेथरे तुमको क्वाइथिला ना क्वाइथिला को दैट मींस ये तुम जानिथिला दैट मींस टू तमे ऑलरेडी जानिथिला ये रहिबो तो टू मोस्ट कॉमन अछि दैट मींस टू इज द करेक्ट है ना ना भी बुझा पड़ो प्राणहिता होची तीनटा मिसी की हेची दैट वेनगंगा पेनगंगा इंद्रावती ये तीनटा मिसी की हेची प्राणहिता है ना लेट्स से गोदावरी एमती जाउची है ना ये तीन जण एठी मिसिबो तापरे प्राणहिता आसे कि गोदावरी देन आसे इंद्रावती तळे आसे कि मीट करिवो एपटे आसे ओनली दैट इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मानसरा ओनली राइट बैंक मानसरा ये रहबो पूरा तोर गोदावरी मैपिंग डन आउ एमिति डिस्कशन कले गोटिए टेस्ट को मिनिमम 4 दिन खंडे लागिवो बुझिवो छ नि तो टिके मते स्पीड अप करे को पड़िवो ना फटाफट को 6 नंबर क्वेश्चन ट्राई करो फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट द वाटर मूव्स फ्रॉम द लेस saline region to the high saline region option 1 option 2 the flow of the water from the Mediterranean Sea to the North Atlantic Sea option 3 the salinity of the equator is the highest compared to the equatorial region sorry other region ना करेक्ट से कोची करेक्ट आगे जितरो सॉल्व करबो करेक्ट को रॉन्ग को आगे सर्कल करिवो ना करेक्ट कोटा कोची को फटाफट को ऑप्शन 1 ओनली ये 2 and 3 1 2 3 2 3 कॉम्बिनेशन देखो ए
2 and 3, 1 2 3 and 2 3 फटाफट को which is the answer हे परिबो नहीं परिबो अच्छा मु कहि दिए ना देखा हियर इज से कोची salinity in equator is highest ना equator रे केबे salinity highest न थाए it would be tropic has that means 3 is got cancelled the 3 got cancelled 3 got cancelled that is the 3 got cancelled obviously it would be 1 the 3 cancel he gala 3 cancel 3 cancel 3 cancel answer would be 1 ना बन ना देख वाटर सब लेस सालाइन रु तमर हाई सालाइन रु लेस सालाइन को मूव करे उल्टा कहली वाटर सब कौन करे हाई सालाइन रु लेस को मूव करे ना कौन मु भी उल्टा कहूँ आजिकल Less saline रो high saline को move करे हाँ कौन पाई बिकॉज ऑफ द ग्रेडियंट because of the what gradient that means जेतरो तमरो less saline रहउची less the salinity more the volume आंसर सुनो less the salinity more the volume high the salinity less the volume so that gradient आसी जिवो सेथि पई water moves from less saline to the high saline because here would be volume of water would be positive here volume would be negative so that गोटे gradient मिलिजो and that will move done and this one is wrong already okay so what is it 3 get cancel answer 1 is the correct one now question number 7 अच्छा जे तुमको क्वेश्चन पचारो कि why tropic region of the world they are having the maximum salinity काहे देखा जाए सेठी अधिक mangroves था वाह चॉकलेट पक्का देबी तो ये को नाटा को जल्दी को कौन हैला The tropic area gets maximum insolation, that is why more evaporation, so salinity is more. because of what maximum insolation because of maximum insolation so that means answer kono insolation because the high temperature lead to the high rate of evaporation and leaving the salt content behind. Then, so next time because the most common tidal patterns featuring the two high tides and the two low tides each day is called what? The answer देखो question से कोई चीज कि मोस्ट कॉमन टाइडल पैटर्न गोटे देख टाइड रो मीनिंग समस्त जानिछ है ना ते मते कहे को पड़िबो नहीं मोस्ट टाइडल कॉमन पैटर्न से कहिछि कि फेचरिंग जो टू हाइड टू लो ईच डे ताकू कोन कहै छै दीटा हाई दीटा लो टाइड से कहछि है ना देखो एही तुमको दिया छै आंसर कोन आंसर सुनो नीप अर्थात लो निफ अर्थात कोन लो ना मिक्स्ड अर्थात कोन ना मिक्स्ड रे कोन कहबो मिक्स्ड रे कोन हबो को एनीवन कोन हबो किछ हबनी हौ ठार और जदि आकु कैंसिल करि परनो अच्छा नीप रो मीनिंग से जानछो लो टाइड बोली ना डायगोनल एंड सेमी डायगोनल को जाउची तापर तुमको मिक्स्ड अपने आप ही मिले छबो ना डायगोनल रो मीनिंग होची गोटिए हाई रहइबो गोटिए लो रहइबो वन हाई वन लो एच फॉर हाई वन लो ये रहबो तमन डायगोनल ना सेमी डायगोनल रे कोन हबो टू हाई एंड टू लो दीटा हाई रहइबो दीटा लो रहइबो बुझि परछ so that means আমি যদি দেখিবা टू हाई एंड टू लो তাহলে তুমি क्वेश्चन पढ़ी कि देखो से कहिची टू हाई एंड टू लो टाइड दैट मींस ऑब्वियसली आंसर हमको मिल जाईची दैट मींस हमको कोन मिलची आंसर मिलची सेमी डायगोनल दैट मींस टू हाई एंड टू लो एंड मिक्स्ड रे कोन रहइबो मिक्स्ड हेई कि रहइबो मतलब गोटिए हाई गोटिए लो बुझि परछन मिक्स्ड हेई कि रहइबो वन हाई वन लो or it would be in between भी ही पारे in between भी ही पारे next ये क्वेश्चन एटा बहुत थोड़ा तमन को कहै छी which of the following ocean current को कहै छै यूरोप रो ब्लैंकेट बोली
कौन है को so answer is what को Gulf Stream. so answer is what that is the Gulf Stream so yes answer is what Gulf Stream the Gulf Stream को कौन कौन से blanket of Europe कौन पे because it's a warm current ये गोटे warm current and that reaches the Norway ये कोठी जाके पहुंचे नॉर्वे रे पहुंचे and नॉर्वे होची कौन हाई लैटिट्यूडनल कंट्री यूरोप रो तेणु करके जदि तमे यूएसए मैप को ड्रॉ करके देखिबो दैट ये तुम्हारा ग्रीनलैंड रहला ये करंट एठी जाके नॉर्वे रे पहुंचीबो इट विल रीचेस हियर आ मु तुमको कहितली आर्टिक एम्प्लीफिकेशन करंट अफेयर रे पढैला बेले ए कथा कहितली सुनीता कथा कहि नथली को सुनीता रोल यस सर कहिथिले चल कुआडे गला ये क्वेश्चन कहया कुआ हितला पूर्वरु सर से झियो कहिदेले तो तुमको इच्छा आइ गला ना कोन हैं तो अरे नो सर इक्वल फ्रीडम दिया इजी समस्त को झियो हेले कहला जे आंसर जानिबारे मतलब कुछ तो तमे केमती जानले सेटा ठीक बोली तमे तो मतलब यू सर कुड हैव अटेम्प्टेड सर गल्फ स्ट्रीम ही हबो ना सर ऑल्दो मु मैप विषय तेटा जानिनी बट नॉर्थ अटलांटिक करंट रे थाए ना सर जोटा कहितले नॉर्थ हाउ अटलांटिक करंट भी थिला ताले लैब्राडोर कोल्ड करंट को सर लैब्राडोर ना कोल्ड करंट कोन सर जानिनी एटा कोन ए कोठी देखा जाए ये तुमको ग्रीनलैंड एंड कनाडा Canada, sir. कैनरी से जानी छो कोठी देखा जिवो मोरक्को West Africa. हां मोरक्को रे Morocco, देखा sir. जिवो Yes. Yes. ठीक है नहीं मोरक्को रे देखा जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 which of the following ocean current is warm so कहै छै गल्फ स्ट्रीम ए भी बा कहल तुमको गल्फ स्ट्रीम All warm of these. बाकी सबसे ट्राई करो सर आंसर ऑल ऑफ द अबव हबो काहे ना गल्फ स्ट्रीम भी अछि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी अछि किंतु नॉर्थ अटलांटिक करंट थिला ड्रिफ्ट हबो कि नै मुझे देखो एबे तो नॉर्वेजियन वार्म करंट बारे में डिस्कस यस करले सर दैट मींस यस सर तार सी तो करेक्ट एबे बा ये तुमको एटा भी कहली करेक्ट तो दीटा तो होचे ना कॉम्बिनेशन तो नहीं कॉम्बिनेशन तो अच्छी कि ए सी कॉम्बिनेशन तो नहीं ना तो ऑब्वियसली ऑल ही हबो और नॉर्थ अटलांटिक प्रथम हैला तुमरो गल्फ स्ट्रीम देन गोटिए करंट रो डिफरेंट जगह रे डिफरेंट नाउ किछि नै कांसेप्ट बस जेतले करंट एठी जाउची गल्फ स्ट्रीम आउ टिके ऊपर को गले ड्रिफ्ट आउ टिके ऊपर को गले नॉर्वेजियन वार्म करंट तीनिटा जगह रे तीनिटा ना गोटिए करंट बस बुझि परछन गोटिए करंट रो वन स्ट्रीम टू ड्रिफ्ट थ्री नॉर्वेजियन करंट बस so that means obviously all of the above would be right answer next question को question number 10 से कोची question कोन कोची अच्छा odd one you have to find the odd one odd one को odd one फटाफट फटाफट ट्राई करो odd one anyone try fast ये परिवन C is the answer एथि पई पेरुवियन कोल्ड करंट बेंगुइला कोल्ड करंट वेस्ट ऑस्ट्रेलिया कोल्ड करंट तो ये हैला तुमरो वार्म करंट सी टा हैला कोन वार्म करंट है ना तो सी टा कोन वार्म करंट तेणु करी आंसर इज द सी डन ना बनी है जो ना 11 नंबर Yes, क्वेश्चन sir. 11 नंबर क्वेश्चन को ट्राई करो ना एटा काको लोकेशन देखि दो टिके मैप रे नहले जो वर्ल्ड मैपिंग अछि ना टिके देखि दो सर्च करके बहुत बढ़िया से करके रखी वर्ल्ड मैपिंग हेल्पफुल तो रहिबो न रहिले किसी असुविधा नहीं निजे भी पढ़ी दे परिबो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 11 आंसर अरेंज द सर फॉलोइंग 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके ठीक ए अछि देखिबा आंसर तब देखिबा चल को फटाफट ना फास्ट देखो आर्कियन
ये कहछि आर्कियन रॉक तो तुमको पढ़ा हुए जेतल पढ़ाए पेनिनसुला रॉक आर्कियन रॉक कहा जाए एंड हिमालयन रॉक होछि तुमरो टर्शियरी रॉक जोटा कि दुनियार सबटु ओल्डेस्ट रॉक तो ये तो ऑब्वियसली एठी कॉम्बिनेशन रो भी जणा पडुछि ये आगे हबो इधर किसी डाउट नहीं बुझिबछन ये रो कॉम्बिनेशन देखो फास्ट तीन थर दैट मींस प्रोबेबिलिटी ये ही हबो तो ये करेक्ट ना कम्स टू द 2 ना देख 2 रो 50-50 एबे ये 3 दिथर अछि 2 दिथर अछि तो आकु एमती पुट कले हबो नहीं तुक्का मारले पक्का भूल हबो तेणु आकु गोटी ही करि परिबो कि जदि तमे आकु टाइम स्केल पढिछ बट जियोलॉजिकल टाइम स्केल रे कोन हुए ना जेतरा में जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढू तो फास्ट थाई तमर कोन दैट इज द व्हाट कैम्ब्रियन एज बा जाको हमें आर्कियन भी को जाको हमें आर्कियन भी को है ना ये रहबो तमर ठीक अछि ना ये सब कोन पीरियड ध्यान से सुनबो ये जो तमरो दिया जाइछि जेमति तमरो लाइक द पैलेजोइक है ना लाइक द पैलेजोइक मेसोजोइक प्रोटोजोइक ना ये सब तो तमरो दिया जाइछि दिस आर किछि होछि पीरियड किछि होछि एरा इयन दिया जाई नाही like this one ये होची एरा ये होची गोटे कोन एरा बट आर्कियन होची कोन इट्स अ पीरियड ये होची पीरियड बुझिबो सबटो लार्जेस्ट यूनिट होची इयन माने टाइम स्केल रो जदि हम देखिबा इयन होची सबटो लार्जेस्ट तापर एसबो एरा ताठू टिके टाइम स्केल रे छोटो तापर एसबो पीरियड है ना दैट मींस ए जो तमरो जो हमर देखिबा आर्कियन ए सबटो ओल्डेस्ट रो आसीबो जाको प्री कैम्ब्रियन भी कहा जाए है ना और जो पैलियोजोइक तमरो आसीबो दैट मींस ये आसीबो नेक्स्ट आसीबो तमरो दैट इज द व्हाट कोडे गला अच्छा ये प्रोटेरोजोइक भी अछि की अछि ठीक अछि सो इट वुड बी प्रोटेरोजोइक है ना ठीक अछि प्रोटेरोजोइक भी अछि दैट इज 1 2 कोडे गला 3 4 कोइ ओहो 8 चले त 84 आगे पड़े अछि दैट मींस ये तो हबनी सो आंसर तमरो कोन अछि 1 2 3 4 हां तो गलत हबो रोटिक के तो पैलेजोइक मेसोजोइक तो तुम्हारो रिसेंट राशि जो आंसर रहेगा डी आंसर इज डी सर फर्स्ट पैलेजोइक आसीबो कि हाँ तो आंसर रहेगा तुम्हारो डी ना ये ठीक अछि ओल्डेस्ट जेमति कि तुम्हारो पेनिनसुला रॉक ये पेनिनसुला रॉक होची ये सब आर्कियन रॉक जोटा कि हमर बेसमेंट रॉक बोली कहसे दुनिया रे सबटो ओल्डेस्ट रॉक देन जेतरा सब तुम्हारो पैलियोजोइक है ना पालियोजोइक से क्लियर पालियोजोइक तो आसीबा कथा ही पड़े वाला तीन को आगे दे देछि से बुझबछन मेसोजोइक होची तमरो जो मेसोजोइक ता होची मतलब सेनोजोइक पूर्व प्रथम होची सुना मु कहि दोछि फास्ट होची पैलियोजोइक तापर होची मेसोजोइक तापर होची सेनोजोइक है ना ये होची तीनटा कॉम्बिनेशन ये तीनटा कोन एरा ये तीनटा होची एरा प्रथम होची पैलियोजोइक तापर मेसोजोइक तापर होची सेनोजोइक एरा भितर आसुची तमरो that is the what Paleocene, Neocene, Quaternary, Holocene एमाने सब आसी जाती बुझिबछनी तेणु करके सेकेंड ता जोटा तुमरो दैट इज द प्रोटेरोजोइक जाको हम कहूचे प्रोटेरोजोइक तो ये तुमरो आसी जो सेकेंड एंड फोर्थ देन थर्ड ना आंसर रहइबो 3 तो आकु गोटे कोन करिवो यारो किछि सिस्टम नाही आकु माने रट्टा मारियो छोडा आकु किछि नाही टिके टाइम स्केल को देखि देबो हॉलोसिन होची प्रेजेंट कहना तुमको पचारिबो हॉलोसिन कोन तो हॉलोसिन होची प्रेजेंट 10,000 ईयर 11,000 साइट 11,700 11,007 ईयर टू अप टू 0 कहले प्रेजेंट एटा होची तमरो हॉलोसिन ये होची तमरो हॉलोसिन कहले प्रेजेंट को कहजे हॉलोसिन है ना एगुडा टिके देखि देबो टिके टाइम स्केल गुडा कहना ये माने माने एथिरे बेसी डिफिकल्ट पचारिबोनी बट टिके देखि देथो देन साहिल बहुत इजी क्वेश्चन आराम से करि परिबो हे परिबोनी ट्राई हे परिबो ट्राई करो सर हमरो साहेल रीजन टा माने सावाना और सहारा रो ट्रॉपिकल रीजन थिला ना सर नॉर्थ आड़ को
ये होची तुम्हारा अफ्रीका ऑन है ना अफ्रीका मैप से तुम ड्रॉ कर देइछि अब yes sir. फटाफट तुम्हें देखि देबो Answer B sir. ये रहबो तुम्हारा सहारा एयर वुड बी द साहेल है ना दैट मींस ऑब्वियसली साउथ तो Yes ये sir. कौन रहबो साउथ पार्ट रहबो एंड सहारा itself 8% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ माने जो हमर लैंड सरफेस तो मु कहबिनी लैंड जति के लैंड अछि तार 8% एका होची सहारा यू कैन इमेजिन एंड अफ्रीका रो 30% जस्ट इमेजिन करो पूरा अफ्रीका 30% से एका बुझिपछन एंड नॉर्दर्न रे तो आसीबनी तो ऑब्वियसली साहेल ताल साहेल टा गोटे कोन ग्रासलैंड ये कोन गोटे ग्रासलैंड ताले आपको एनवायरनमेंट रे हमें कोन कहिबा एनवायरनमेंट रो कोन कहिबा एनीवन इकोटोन Tropical. ताले को कोन कहिबा इकोटोन है ना मैंग्रोव ग्रासलैंड ये सब कोन इकोटोन है ना तो आपको हमें कहिबा इकोटोन डन 13 नंबर क्वेश्चन को आस अरे कोन हेला अरे क्वेश्चन सब तो माने करी न किया गुरु तुमको तो मिलिथिला केबेटू ए क्वेश्चन दिया हिथिला केही ताले डिस्कशन निज तरफ करी न टिके टिके निज तरफ करिवो ना कोन कहउछ हां केही करी न कहीं गोविंद भाई कोन किसी कोन कहीं चुपचाप पूरा सर କିଛି ଆସୁନି କଣ କରିବି किछि आसुनी तुमको डेली पढुछ किछि आसुनी अरे ना बुड़ेइबो ना कोन हां मते कहीं लागिलानी से तो किछि त आसीबो आउ थरे रिवीजन दरकार ना कोन କିଛି କିଛି ଆସୁଛି ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭୁଲ ହଉଛି अरे से ना जदि दरकार कहिबो ना जे दरकार हमको रिवीजन दरकार दिया अब कोन होची क्लास रे देई दिया अब रिवीजन है ना ए दरकार सेटे कहिबो ठीक अछि और जा भी हो एबे ट्राई करो तुमर ए बी ट्राई करो एबे देखो ट्राई करो आपको हे परिबो ना हे परिबोनी अवश्य तुमको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा ही नहीं तुम मानकु सेटा भी मो हां तुम मान प्रॉब्लम होची जे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा ही नहीं बोली Indian geography भी पढ़ा है नहीं sir. अच्छा ये सुनी ताही कहूची आउ के कहनी हां तुम लेट आसी ठीक कहछ और ठीक अछि वर्ल्ड ज्योग्राफी तुम स्टार्ट कर देबी है ना पढ़े देबी हौ अच्छा एटा को जो माने पढ़िछ को कोन हैला संगीता विश्वाल को संगीता मैडम कहतु आपन कहतु ए ट्राई करो ना कौन अच्छी एनसीईआरटी पढ़ी न कि एनसीईआरटी पढ़ी देई था फटाफट तब माने कौन करियो जो एनसीईआरटी पढ़ी देई था मु पढ़ाई देबी तुमको वर्ल्ड ज्योग्राफी पक्का है ना तुमको ए वीक रे किबा नेक्स्ट माने नेक्स्ट वीक सुधा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया स्टार्ट कर देबी जा भी हो ये कैंसिल आंसर वुड बी बी ओनली ना ये फटाफट कहूची कहीं सुनो जो तुम्हारा डेजर्ट होता है डेजर्ट सब 20 रु 30 डिग्री भितर होता है कौन पे होता है बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर हाँ कि नहीं ना बुझा पड़ोनी क्या कहीं भी पढ़ी न कहीं भी हमर पुराना स्टूडेंट ना जी नो वन इज देयर केवल सुश्री संगीता ओल्ड स्टूडेंट आउ के ना जनक न अभिलाष ना सुनीता ना आपको ओल्ड के ना तो ये आंसर वुड बी बी ना एटा बुझा पड़िबो ना बुझा पड़िबोनी आ देखो मतलब डोंट साइबे तो पछारिबो जोटे ना है ना तो ये रहिबो ताले मते लागिलानी तमनको ऑफलाइन क्लास रे न पड़िबा ଭଲ ହେଲା मते लागिलानी किछि त आसुनी और कोन डिस्कशन करबी और ठीक अछि 20 टू 30 डिग्री रहबो तुम्हारा आंसर है 20 टू 30 डिग्री सर हमें वार्ल्ड और ओडिया जब ओडिशा ज्योग्राफी पढ़ी है सर हमें पढ़ला बेलू सरी जाइतला माने आपण में भी पढ़ी थे प्रोब्लेम में हमें फिलहाल को सरी जाइतला ओडिशा नहीं सर ज्योग्राफी हाँ सेटा आउथरे पढ़ाबो और जा भी हो तो कहना एटा ना बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ठीक है से पढ़े तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े हौ छाड़ा जो माने पढ़िছে ओडिशा ज्योग्राफी तो ओडिशा ज्योग्राफी तो पढ़ा सरी जाइछि जो माने पुराना जो माने नुआ आछ ठीक अछि बुझुछि मु और ठीक अछि ना 14 नंबर क्वेश्चन को देखो
अच्छा डेजर्ट फॉर्मेशन पे कंडीशन कौन दरकार फटाफट मु कहि दूची एक तो होची तुम्हारा हाई प्रेशर हेइथवा दरकार कोल्ड करेंट थवा दरकार वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट इंटेरियरिटी दरकार लेस रेनफॉल जियोलॉजिकल फैक्टर बहुत गुड़ा कंडीशन को लेके डेजर्ट फॉर्मेशन हेइथे साधारणतः डेजर्ट होता है तुमरो 20 रु 30 डिग्री कारण एटा होची हाई प्रेशर बेल्ट हाई प्रेशर मींस विंड कोन करिवो डाइवर्ज करिवो कन्वर्ज करिवो नाही जाकू कोन कहे सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न एंड रेनफॉल पे कोन दरकार सेंट्रीपेटल पैटर्न दरकार और लो प्रेशर जेहेतु हाई प्रेशर रेन हबने डेजर्ट हबो एंड दैट इज व्हाट 20 रु 30 डिग्री लैटिट्यूड रे डेजर्ट फॉर्मेशन हेता है ना करेक्ट हिजबे ठीक है now comes to the 14 number question 14 number question से कहिछि देखो से कहिछि measure of the world hot deserts they are located in the western side of the continent between 15 to 30 degree north and the south which of the sorts से कहिछि यार गोटे एग्जांपल दियो 3 and 4 Atacama Desert and Great Australian Desert. से कोन ମୁଁ कहिछि देखो ଜାଣିନି। से कहिछि देखो वेस्टर्न साइड रे ना पाटागोनिया होछि ईस्टर्न साइड है ना हाँ कि नहीं तेणु ये तुमरो कैंसल वन कैंसल हेगला गोबी होची सेंटर रे वन सो इट वुड बी आंसर रहबो तुमरो 3 and 4 ये पूरा मैपिंग क्वेश्चन सो आंसर रहबो 3 and 4 वन कैंसल हेगला बा ईस्टर्न साइड रो छी तुमको जेतेबेले जो साउथ अमेरिका अछि साउथ अमेरिका रो ए ईस्टर्न साइड रे एठी होची पाटागोनिया कोल्ड डेजर्ट अर्जेंटीना ओके तो वन जेतेबेले कैंसल हेगला दैट ऑब्वियसली आंसर बाहर हेगला तो कौन 3 and 4 is the answer. Now question number 5. Which of the following districts of Odisha having youngest rock? ନୟାଗଡ଼ Nayagarh. କେମିତି କହିଲ ତମେ ନୟାଗଡ଼ ବୋଲି ସାର୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ କଥା କହିଥିଲି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କହିଥିଲି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଓହୋ ଯଦି ମୁଁ କହିଥିଲି ମତେ କରେକ୍ଟ କରିଦବ ତାହେଲେ ଭୁଲ ଅଛି କି ହଁ ଆନ୍ସର ହଉଛି ପୁରୀ Puri? ପୁରୀ ଇଜ ଦ ଆନ୍ସର କଣ ପାଇଁ ଆରେ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ନୂଆ ରକ୍ ଫର୍ମେସନ ହଉଛି ସେ ତ ଓଲ୍ଡ ରକ୍ ନୟାଗଡ଼ ତ ଓଲ୍ଡ ରକ୍ କେମିତି ହବ ତମର ये जो तमरो नयागढ़ एटा ओल्ड रॉक ये सेंटर ये होची कोस्टल जेतेबेले तमर जो डेल्टा फॉर्मेशन होची डेल्टा टा कोन न्यू रॉक हां के नहीं ताले पूरी हबो ना बट तो पूरी सर एठी ମୁଁ ପୁରୀ ମାରିଲା ପରେ ବି ମୋ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ରେ ସେଟା ଭୁଲ ମରା ହେଇଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଆପଣ ନୟାଗଡ଼ କହିଥିଲେ मु कहଥିଲି नयागढ़ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଆନ୍ସର କିନ୍ତୁ ପୁରୀ କରିଥିଲି ସେଟା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ମାରି ଦେଇଥିଲେ मु मारଥିଲି ନାଇଁ ମାନେ ଯିଏ ବି କରେକ୍ସନ କରିଥିଲେ ତ मु ସାର୍ मारिला ତାକୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ आंसर भी बोलते हो ना ना दुई मार्क पाइबो ना गोटे मार्क ना ना सेटा से चेक करथो जे से भूल करथो मु करिनी से जे चेक करथो मु काई करबी एते बड़ मिस्टेक मु करबी ना तो आंसर हबो तुमर पूरी कारण जो माने ओडिसा ज्योग्राफी करिच मु पढैतिली क्लास रे मु कहितली लैक्विस्ट्रेन फॉर्मेशन हुए हियर इज द लैक्विस्ट्रेन रिटन ये तुमको कहितली कि लैक्विस्ट्रेन फॉर्मेशन हुए कोडी फॉर्मेशन हुए चिलिका कोडी पुरी रे आसुनी की पुरी आसुची कि नहीं गंजाम पुरी खोरधा रे चिलिका आसुची तो लैक्विस्ट्रेन फॉर्मेशन जदी होउची लैक्विस्ट्रेन होउची सबटू ओल्ड यंगेस्ट रॉक तो लैक्विस्ट्रेन कोन एनीवन और एटा पढ़ाई छी एटा एटा पुनी कहबन कि ना सर एटा पढ़ै नांती एटा पुनी कहबन तो संग दामटा पढ़ाई छी कि नहीं अपन ओडिसा ज्योग्राफी पढ़चंती तो दैट मींस हाँ सर पढ़ाई छी ताले कोन को लैक्विस्ट्रेन कोन लैक्विस्ट्रेन हैला जो लेक थाए लेक रे जेतर लेक ता गोटे पोती हे जाय बा सिल्टेड हे थाए जो एरिया पोती जाए से एरिया को कहै छै लैक्विस्ट्रेन डन ठीक अछि कोन मु कोनी के खाली लेक कोन से गोटे डिप्रेस्ड एरिया तेणु करके लैक्विस्ट्रेन ताले कोठी देखा जो चिलिका ओबवियसली आंसर तुमको कहि देली तांपरा लेक अंशुपा लेक ये सब दिया छै ओबवियसली ए रहबे कोन चिलिका रो पार्ट है ना कारण एठी रिवर अछि दया और से नै कि डिपॉजिट करूची
तो इट वुड बी चिलिका ना नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन दे देखो ओडिशा रा कोस्टल प्लेन एटा कोन रिसेंट आ मु तुमको आउ टिके पूर्व कहितली हॉलोसिन रिसेंट बोली कहितली कि नहीं 11,700 कहितली कि नहीं 20 प्रेजेंट आउ टिके पूर्व कहितली माने पकाओ जस्ट कहितली कि नहीं तो एबे सेठी आंसर बाहरुची देखो सेठी बुली के आंसर बाहरुची नेक्स्ट एटा ट्राई करो एटा भी तुम्हारा ओडिशा ज्योग्राफी पढ़ाई छी एंड यू कैन आल्सो फाइंड आउट द करेक्ट वन आंसर सर सी बोधे काहेकि ना जदि सी रो आमे आस्का रोलिंग प्लान को देखिबा सी रो जदि 3 हबो तार ऋषिकुलिया बसीन अछि सर नहीं नहीं ठीक है ताको टेबल को मैच कर दिए एठी देखो से मैच करे छी A5 B3 एमती से करे की दे सर छी आंसर सी मते लागुछ आगे मैच कराओ तो अच्छा मु को केउझर का से मैच करिवो बैतर बैतरणी दैट मींस Boyfriend. A5 A5 बलांगीर रेढाखोल का से मैच करिवो महानदी महानदी दैट मींस B3 आस्का का से तो करिवो ऋषिकुलिया that means C3 अब तो रहिला एबे ताले A5 B3 बीटा कोन हैला बीटा 5 B4 सर B4 तो B4 नहीं कि A5 B4 ताले देखो मैच होची कि नहीं A4 A5 B4 B4 B तो तीनटा 4 अछि ताले C को भी चेक करे पड़ो ताले C टा तो गोटे ठीक अछि D टा को 3 देखि दियो खाली खाली D टा को देखि देला मिल जिवो D की अछि रायगढ़ रोलिंग अपफ्रंट डीटा नागावली हबो ना माचकोंड The ठीक है match count, Sabari match count. तो इट वुड बी A तो D1 ऑब्वियसली सी वुड बी आंसर दैट मींस तुमको सी मिल है ना तो ये चॉकलेट मिल सर गला चॉकलेट मु कोई नहीं ते देबी बोली कोई मेरे कोई जोटा मु कहि चॉकलेट देबी सेटा काहा को आसीबनी बोली कहि आज जोटा मु चॉकलेट अनाउंस करे एटा तमे जानिबा आसीबनी बोली अनाउंस कराई छी बुझी परछ नहीं आज तुम कॉपी कर दो सेटा अलग कथा अदरवाइज आसीबनी नाउ तुम कैसे गोल्डी लॉक जोन कौन कुह फटाफट ट्राई करो गोल्डी लॉक जोन कौन प्रथम C. कथा सुनो Search for Earth-like planet in outer space. यस सी तो आंसर होची ये होची गोटे हैबिटेबल जोन इन स्पेस एटा तुमको स्पेस पढ़ेला बेले गोटे ही जिंस मु छाड़ी देछि आ एटा क्वेश्चन आसी कोन करबा तो एटा मो भूल बुझि परछ नहीं तो ये गोटे ही स्पेस पढ़ेला बेले छाड़ी देछि एते जिंस पढ़ेले स्पेस एटा मोर मन नथला कहबे बुझि परछ तुमको इंटरस्टेलर जोन पढ़ेली तुमको कुइपर बेल्ट पढ़ेली तुमको ओट क्लाउड पढ़ेली तुमको इंटरप्लानेटरी सिस्टम पढ़ेली ब्लैक होल पढ़ेली सब पढ़ेई देली किंतु एटा ही छाड़ी जाइतला और एटा ही क्वेश्चन अछि जा भी हो सो गोल्ड डी लॉक जोन होची गोटे हैबिटेबल जोन इन स्पेस लाइक अर्थ जोठी वाटर वगैरह सब किछि अछि राइट टेम्परेचर वाटर ए सब देखा जाए है ना तेणु आकु किए खोजिला केपलर आर ना कोन थाले दैट इज द 18186F आर ना होची 186F तो ये आकु दैट मींस आमे कहबा अर्थ लाइक प्लैनेट आउटर स्पेस रे जोठी की अर्थ भलिया कंडीशन अछि लोक रही परिबे एटा टिके मन रखो ये क्वेश्चन यूपीएससी पचारि छी शायद 2016 ना केबे पचारथला कि 16 हां 17 तो नो मते लागुची 16 हेइछो क्वेश्चन यूपीएससी रो ना 20 नंबर क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखि दियो एटा तुमको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई छी सब डी सर आंसर रे कोन बी है ना केमिति देखि दियो ना जदि तुम इंडिया मैप ड्रॉ करिवो है ना
लेट्स से जदि हम इंडिया मैप ड्रॉ करूचे तो ये जो तुम हिमालय अच्छी एमती बेंड करुची एपटे एमती बेंड करुची हिमालय एते समस्त जानछो एला बेंडिंग पार्ट एला तोरा बेंडिंग पार्ट याकू कहे कोन सिंटैक्सियल बेंड है ना तेणु ए ब्रह्मपुत्र तो एमती जाउची तो एमती एंटर करके इंडिया को आसुची तो बिकॉज ऑफ द सिंटैक्सियल बेंड जोगु बाकी रिवर दे आर मूविंग तो मेकंग वगैरह एमती आसुची है ए सब एमती जाउची ए सब कोठी डाइवर्ट हो रीजन होची बिकॉज ऑफ द सिंटैक्सियल बेंड एटी जेतु तमरा पीक अछि तो ये जाई परुनी इंडिया को एंट्री करूची एठी है ना तो इंडिया को एंट्री करके आसुची अच्छा हिमालय रो हाउ मेनी सिंटैक्सियल बेंड्स आर देयर इन हिमालय एनीवन two syntactical bends. One is the western side and one is the eastern side. Like your what? That is the Namcha Barwa in east. In east, the highest peak is what? Namcha Barwa, and west is Nanga Parbat. Nanga Parbat in Pok. So these are the. So that means answer would be what? That is 20 sir ରହୁଛି ତମର east रे को belt sir east ରେ ଯୋଉଟା ତମର ରହିଛି ଆମର ତାକୁ नामचा बरुआ पीक अरुणाचल प्रदेश जोटी से यू टर्न नहीं कि इंडिया को एंट्री मारुची है ना